So please take Padmasan position. खाली सर ही लेंगे क्या सब? नहीं नहीं दे रहा है. Close. Sir, can I start now? Close your eyes. Concentrate on your breath. Sahana bhavatu, sahanau punatu, sahaviryam karavavahe, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahe. Om Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms. Place it on your eyelids. Blink it slowly. Now give a gentle facial massage. Come back to Namaskar Mudra. And with a smile on your face, open your eyes very slowly. So now, first we are going to begin about Griva Shakti Vikas. That is just a warm up, but we are concentrating on breathing and as well as the joints. So shall we start now? So by sitting itself or by standing, sir? Sitting, I think, would be comfortable for all of them. Or whichever way you are comfortable, you let them do. Okay, sir. Thank you. Okay, so first we are going to do the first variation. That is, first we are inhaling in front, and while go to the sides, we are exhaling. So you can keep hands in Chin Mudra and close your eyes and inhale in our front side. We can inhale slowly. We can feel the air filling our lungs very slowly. Then turn to right side and exhale very slowly. Then we can inhale and come back in the normal position, in the front position. Then we can exhale and go back to the left side. We should feel a stress in our this thing, joints, Griva area. Like this, we can do 4 to 5 rounds slowly. Done. Hope all are done. If you're practicing, then
please have your camera on. Otherwise, it's okay. जिन्हें खाना खाया और प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो कैमरा बंद रख सकते हैं. Otherwise, let's have the camera. So we can go to the second variation. That is, we are just moving our neck up and down. While moving up, we are inhaling, and while coming back, we are exhaling. And we should not move our body. Only the neck, this joint area need to be moved. Only to make this area flexible, we are doing that. So we can either, we can inhale back like this, slowly, and while coming down also, we can exhale, and our chin should reach this area. Like that, we can repeat like 4 to 5 rounds. Slowly we can do. Feel the air moving through our lungs and feeling. Feel the energy flow. Okay, the next variation is rotating our neck. While we are going back, we are inhaling, and while we are coming down, we are exhaling. Like this, either sides, clockwise and anti-clockwise, we can do. Slowly, we can start from either from back. We'll start from back so that we can inhale and come to. And our ears to try to touch our ears near the shoulder. Don't lift the shoulder area, just try to touch it if possible. This is good for some muscle spasm or anything in this area. Very good. Okay, Meghaji, I think Then with a jerk, three variations are enough. Thank you so much. It was very well explained. Good. Keep it up. thank you. We'll talk about prayers later on. There are some feedbacks on the prayers part. We will discuss. Okay. खुशबू जवाली शक्ति विकास का करवा लो आप 2-3 वेरिएशन. 2 वेरिएशन करवाओ. Am I audible to you, all of you? Yes, you are audible. So please, all of you stand up.
होल्ड ऑन, सॉरी मैं ना प्रोजेक्ट नहीं कर पाया लास्ट वाले में. नाउ आई एम जस्ट Okay. Okay, our first variation is to raise our right hand with inhaling and touch your ear and go down with exhaling and again touch your thighs. Here we do it for five times on left and right hand both. Okay. Okay, first inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Okay, last we do countdown with inhaling. Just 10 seconds. Okay. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale. Okay, same we do with our left hand for 5 times. Inhale. 1, exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Again, we do countdown for 10 seconds with our left hand. While inhaling, you just hold your hands for 10 seconds. Inhale. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale. Go down with your hand and touch on your thighs. ओके. दोनों हाथों का साथ में करा लो एक बार. Just do with both your hands. While inhaling, you just raise your hands and touch your ear. And go down your hand with exhaling and touch your thighs. This will do for 3 times. Inhale. Exhale.
Okay, great. Thank you, Khushbu. Well done. रोटेशन वाला रोटेशन वाला नहीं कराना है अभी. रोटेशन वाला मैं करवाता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है बहुतों को नींद आ रही है. तो स्टैंड अप एवरीवन. खड़े हो जाएंगे. नेहा जी, आप क्या आज उपवास है क्या आपका सोमवार का? सर उपवास नहीं है एक्चुअली. मैंने ना जस्ट 2:30 बजे आज खाना खाया है. Very बहुत good. ज्यादा लेट हो गया था तो मैं इसीलिए वीडियो में इसलिए कुछ नहीं बोल रही थी. ठीक है, कोई बात नहीं. बोलते तो रहो, वैसे बोलने का तो कोई मना ही नहीं है. एक्सरसाइज मतलब आज जस्ट नहीं करना है. सॉरी, मतलब आगे से नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी. बट क्या है, आज रूटीन ऐसा हो गया, हो नहीं पाया. कोई नहीं, तो हम लोग कम प्रैक्टिस करेंगे. सिमरन जी, आपका क्या सीन है? सर सेम लंच लेट किया था. भाविका जी, लेट लंच. लेट लंच सर. ठीक है. As per राहुल Monday. इज डूइंग. अनुज, मेघा जी, आप अपना कैमरा शुरू कर दो. आप तो अपने तो करवाया है अभी. अपर्णा को आई गेस नींद आ रही है. चलो, जो जो जग रहे हैं ना वो लोग तो स्कूल व्यायाम फटाफट कर लेंगे एक बार. सॉरी, पूजावल्ली शक्ति विकास का थर्ड वेरिएशन. ओके, चलो स्टैंड अप. सभी खड़े हो जाएंगे अपनी जगह पे. जो जो करने वाले प्रैक्टिस, अदरवाइज बैठे रहेंगे. ओके, ग्रेट. फीट टुगेदर, दोनों पैरों को साथ में जमीन पर. ओके, हाथों को मुट्ठी बांध के अपने थाइस के पास में रखना है. ग्रेट. नाउ इनहेल कंप्लीटली एंड देन एक्सहेल इट. ठीक है, इनहेल करो फिर एक्सहेल करो कपल ऑफ टाइम. ऑलराइट. नाउ आप अभी इनहेल करोगे, पूरा श्वास अंदर भरने के बाद जस्ट रोटेट योर हैंड until you are like कि अभी मुझे श्वास छोड़नी है, एंड देन आवाज के साथ करके आप श्वास छोड़ोगे. स्टार्ट. इनहेल, होल्ड योर ब्रेथ एंड देन गो. वेरी गुड. नाउ एंटी क्लॉकवाइज, सेम हैंड, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा. श्वास भरने के बाद फास्ट. मेघा जी एकदम आवाज के साथ. ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ से क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज क्विकली. बॉडी को नहीं हिलाना है, ओनली जॉइंट विल मूव. ज्यादा देर तक करो. होल्डिंग योर ब्रेथ. चलो, ग्रेट. नाउ दोनों हाथों को साथ में. इनहेल, clockwise and then anti-clockwise. All right. Chalo, sit down.